A very good morning. It is said a creative person wants to be a know it all. He wants to know about all kind of things ancient history, 19th century mathematics, current manufacturing technique, hawk futures. Because he never knows where these ideas might come together to form a new idea. It may happen 6 minutes later, or 6 months, or 6 years, and may the next 6 hours. But he has faith that it will happen. Everything in the world remains to be done or done over. The greatest picture is not painted yet. The greatest play isn't written. The greatest poem is unsung. Physics, mathematics, especially the most advanced and exact of the sciences, are being fundamentally revised. Psychology, economics, and sociology are awaiting a Darwin, whose work is in turn waiting an Einstein, and whose work in turn is waiting a Shakespeare. Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risk, breaking rules, making mistakes, and having fun. Over ambitious projects may be objectionable in many fields, but not in literature. Literature remains alive only if we set ourselves immeasurable goals, far beyond all hope of achievement. Ladies and gentlemen, National Progressive Schools Conference welcomes you to NPSC Lit Fest 2023. This star studded morning illuminates the stage of India Habitat Center. Our distinguished chief guests, ideating leaders, mentors, students, and all the audience. How charming is this day where we celebrate this fest of this magnitude? Well, most of us enjoy a good read, whether it is a novel that moves us to tears, a play that intrigues, or a poem that rouses our passions. A piece of well written literature can have an impact on our emotions, on our behavior, and on our value systems, igniting all the pervasive light of knowledge. Lighting the lamp is also a reminder of how far we have come. It reminds us the challenges of the past, of how we have overcome it all and became what we are today. May I request our much honorable chief guest, Padma Vibhushan Dr. Sonal Mansingh ji, former chairpersons NPSC, Dr. Amita Mudla Vatal, Dr. Ashok Pandey, Mr. L.V. Sehgal, Mr. S.L. Jain, all former chairpersons of NPSC, Chairperson NPSC, Dr. Sudha Acharya, Ms. Aditi Mishra, Vice Chairperson NPSC and Principal DPS 45, Ms. Asha Prabhakar, Secretary NPSC, Principal Bal Bharti Public School, Noida, to kindly light this lamp of knowledge. May I request Usha Sri ma'am to be there for lighting the lamp, please. कान्तं कलितैकान्तं कलये सुदुरन्तं करुणावरुणाले चरणं विजितरणं शरणं करुणावरुणाले चरणं विजितरणं शरणं यामोऽयमिदं शरणं कृतमत सुवितरणं जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभा भास्वर वर लंबोदर दर हर हर कलभा Thank you. It is said knowledge gets embedded in our consciousness when we connect to a higher, elevated level. And this is what we had just now. May I now request Chairperson NPSC, Principal ITIL Public School, Dr. Sudha Acharya,
to formally welcome our dignitaries. The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of the centuries. It is said we must seek glory in the illumination of a lamp anywhere in the world. 9 decades ago, what Dr. Rabindranath Tagore said about creativity and books is relevant even today. Good morning and namaskar. On behalf of Team NPSC, I echo a very hearty welcome to our very distinguished chief guest, an iconic cultural personality of India, Member of Parliament, Padma Vibhushan, Dr. Sonal Mansingh ji. Ma'am, your luminous presence has brought an ethereal age to this Lit Fest. It is my proud privilege to welcome most eminent and illustrious poets, novelists, writers, all our former NPSC chairpersons, ideating principals, enthusiastic mentors and teachers, and my dear students. I am honored to welcome you all today to the first ever NPSC Lit Fest organized to mark 50 glorious years of its existence. This is a notable day. This is a notable day for us, which highlights outstanding personalities whose literary works has had a significantly positive impact on the legacy of humans. By tapping renowned creative personas from our diverse cultures, this event plays a great role in enhancing national cohesion and integration. A platform like this provides an opportunity to rediscover our roots and remind us of our tangible and intangible heritage that has been in existence for generations. It is only through appreciating each other's thoughts and ideas that we will live in harmony as a community. Hence, it is befittingly said, Lit Fests are catalyst for intercultural dialogues. I am confident that this event provides a beautiful and worthy forum for each one of us to love, appreciate, and showcase the diverse forms of written marvels aesthetically knitted in 4 sessions, be it poetry that has a therapeutic effect deliberated by our distinguished poets, or the candid forum for students, the budding authors, with the renowned writers unraveling the mysteries behind impressionable ideas. In yet another insightful session, we will go through the evocative experiences of scaling the Everest, juxtaposing it with the spiritual elevation. The session, the cliffhanger, and thereby hangs a tale. In the words of George Mallory, the famous mountaineer, it is not the mountain we conquer, but ourselves. Today's Lit Fest culminates with textures and shades of progressive writings that will set a forum for strong realizations through its lens of logical and critical artistry to the impact it creates in our hearts, the seat of emotions. India is an ancient civilization but a young, restless nation impatient for change. The challenge for us will be to embrace rapidly escalating technological disruption without losing touch with our long established practices. This Lit Fest addresses contemporary concerns, giving us ideating leaders a unique literary festival of ideas. Festivals like these have been at the forefront in revitalizing interest of the young technologically driven generation towards the fine world of literature. I'm sure the writers and thinkers gathered here will discuss how we as a society and nation can resolve this. I say this with conviction that the next few hours will stimulate all the participants and members with many exciting new ideas and insightful perspectives. On behalf of NPSC, I thank also HT Education, who is our social media partner, for their unwavering support. Let us all remember that the true achievement of programs like NPSC Lit Fest is the establishment of new relationship and friendship that paint our life's canvas with a variety of colors. So, friends, it's time to celebrate the power of words. Thank you. Thank you, ma'am. Art doesn't give rise to anything in us that isn't already there.
It simply stirs our curious consciousness and sparks a fire that illuminates who have always wanted to be. Ladies and gentlemen, to appreciate an artwork, see it as a temple or holy altar. Approach it with an open mind and soul. Recollect yourself in front of the work as one meditating on the wonders of creation. Connect with the energy flowing from it and let higher order unveil the mysteries behind the creativity. Ladies and gentlemen, today we have with us one similar elevated energy. Our chief guest is an iconic personality. To know about her is to discover someone who exemplifies an aesthetic amalgamation of art, culture, knowledge, speech, an epitome of perfect conjugation of, as we say it in Hindi, a harmony between mansa, vacha, karmana. The iconic cultural personality of India and Member of Parliament, Rajya Sabha, Dr. Sonal Mansingh, has been unique among dancers who have mastered multiple Indian classical dances form from different parts of India, like Bharatanatyam, Odissi, and Chau. She's a great scholar and seasoned art administrator who has performed, given lectures, and conducted workshops in 90 countries around the world. As the founder president of Center for Indian Classical Dances, she has trained several talented performers who are carrying the message of Indian culture all over the world. She is the recipient of the high civilian honors of Padma Bhushan and Padma Vibhushan from the President of India. She's been honored with Sangeet Natak Academy Ratna. She's also been nominated as one of the Navratna for Swachh Bharat Mission by the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. She has served as chairperson of National Sangeet Natak Academy and serving second term as trustee of Indira Gandhi National Center for Arts. May I request our chief guest, the phenomenal and the most distinguished Dr. Sonal Mansingh ji, to enlighten our audience. नमस्कार करती हूँ आप सबको। आज महाशिवरात्रि का शुभ पर्व है, इसीलिए मैं भगवती और भगवान दोनों के मिलन का आज पर्व है। प्रकृति और पुरुष, शिवा और शिव, ये सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, पालनहार हैं। These are the two creative principles that come together. शंकराचार्य 8वीं सदी 8th century, महा आदि शंकराचार्य, his Ardhanarishwara Stotram begins with नमः शिवायै च नमः शिवाय। सबसे पहले माता को प्रणाम, उसके बाद पिता को। One of the verses, there are 8 verses. One of them, Ambodhara Shyamala Kuntalaye Tadit Prabhatamra Jatadharaya Divyambaraye cha Digambaraya Namah Shivaya cha Namah Shivaya। अम्बोधर, अम्ब यानी पानी, पानी जिसमें होता है यानी बादल, रेन क्लाउड्स। अम्बोधर श्यामल, वैसे डाक जिनके बाल हैं लंबे। कुंतलाये, कुंतल, मैं इससे समझा रही हूँ कि अंग्रेजी में सारा कारोबार होता है आज भी, लेकिन यदि हिंदी बोली जाए, जो संस्कृत की सुपुत्रियाँ हैं भारतवर्ष में, चाहे ओडिया हो, बंगाली हो, गुजराती, महाराष्ट्रियन, मराठी, कन्नड़, मलयालम, इवन तेलुगु, तमिल, हमारा जिसको कहते वर्नैक्युलर इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ वे, एंड इंग्लिश। तो ये बात मुझे बहुत अखरती है कि इसी मिट्टी से हम पैदा हुए, हमारे पुरखे पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिलना है। इस मिट्टी की सुगंध जिसमें है मातृभाषा हमारी, अपनी अपनी मातृभाषा और हिंदी, जो एक सर्वोपरि है कम से कम उत्तर भारत में।
अंबोधर श्यामल कुंतलायै तड़ित प्रभाताम, तड़ित तड़ित यानी बिजली, काले बादलों में जो बिजली चमकती है वैसी जिनकी जटा में बिजली चमकती ऐसे कौंधती हैं, कॉपरी है ऑफ शिवा जटाधराया। अब जो है कि जहां आपका साइंस कम्स टुगेदर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड आर्ट एंड लिटरेचर, in very simple words. Divyambarayai cha digambaraya. Divyata comes from the dhatu div, which means prakash, tej, incandescence, effulgence, light. Simply put. जिसका रेमेंट, जिसका साड़ी, जिसका वस्त्र देवी का दिव्यता है, जो छाई हुई है अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है। And Digambaraya, Dik yani dimensions, not only Disha, but all the dimensions. Does space have dimensions? This is unlimited space, ever expanding space. कहने का तात्पर्य क्या है कि जो निराकार है, indescribable in words, but somewhere in our little buddhi, manda buddhi, अल्प बुद्धि में कहीं ना कहीं ये एक आइडिया रहता है कि we do not know anything about so many things. And yet, प्रकृति ने हमें दिमाग दिया है जो अंतरिक्ष में घूमता है. You can reach Mars, you can reach sun, solar systems through your mind, through your ideas, the creativity. इसीलिए नमः शिवाय च नमः शिवाय. अब ये हीलिंग टच जो एक मुझे बताया गया आज की जो सेशन है अभी सुबह की, उसमें मैंने कल कुछ रात को ऐसे ही लिख दिया छोटा सा कि काव्य कविता क्या है. बहुत सारा है लेकिन हृदय को झकझोर दे. It moves your heart. झकझोरना is not only move, it's हिला देना. हृदय को झकझोर दे, जो शांति दे, आनंद दे, शक्ति दे, आशा दे. It creates hope, which is a very big thing today. You are all teachers, guru बैठे हैं यहाँ पे सारे. मैं भी 45 वर्ष हो गए मेरी इंस्टीट्यूट को, श्री कामाख्या कलापीठ. और आप मैंने देखा 1973 से आपका है, 1963 में मैंने बीए कर लिया था. तो एज अ स्टूडेंट ऑफ डांस, एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर ऑनर्स से किया मैंने बीए बॉम्बे यूनिवर्सिटी, एंड एज अ टीचर ऑफ डांस. I myself has been a student all my life, I still am. And as a teacher, as a guru, I have seen generations now. The change in generations, the change in the mindset, in the ideas, and of course technological interventions. लेकिन दिल जो मानता नहीं वही रहता है. इसीलिए आज के जो टाइम में लोग, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में छोड़ देते हैं. कविता, काव्य, काव्यमयता, आई वुड रादर से द पोएटिक डायमेंशन इन लाइफ, काव्यमय होना, it always rekindles hope in the heart. तो काव्यमयता क्या है? नॉट ओनली काव्य, काव्यमयता शक्ति दे, आशा दे, प्रेम श्रद्धा के किरण. प्रेम बहुत बड़ा शब्द है. ढाई कहा है ना कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. और पंडित का अर्थ है विद्वान, जो जानता है या जानती है. I mean, it's not about masculine, feminine, it's just a generative word, nomenclature. So, प्रेम जहाँ पे सूखने लगता है, जहाँ पे प्रेम अव्यवस्थित हो जाता है, where love begins to wither,
फॉर वॉट एवर रीज़न, वहाँ पर गड़बड़ शुरू हो जाती है, नॉट ओनली इन द पर्सन बट इन द वाइब्रेशंस ऑफ द पर्सन. आई थिंक वी बिलीव इन दैट थियरी कि कुछ कोई व्यक्ति है, पास जाने का मन नहीं होता, एक औपचारिक इनफॉर्मल हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते जी 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 कैसे हैं. और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं विच जस्ट कॉल यू, यू लव टू बी अराउंड, you want to be with them. ये emanations of the vibrations come from where? प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, आशा, what you call in one word positivity. तो काव्यमयता ये भी है कि जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी भरती रहे. Situations come and go like bubbles on water, but आपके मन में उसका आक्रोश, वेदना, पीड़ा, sorrow, sadness, hopelessness doesn't remain. It comes and goes. Because आशा और प्रेम की किरणें आपको आलोकित करती हैं. और उसके बाद मैंने लिखा है जीवन जीने की जो आस दे वो है काव्य और काव्यमयता. ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. सी व्हाट आई एम सेइंग इज नथिंग आउट ऑफ द बुक्स. It's from the book of my own life experiences. मेरा एक्सीडेंट हुआ 1974 में in Germany at the. I've been on the public stage from 1961, when a lot of you were not born, I'm sure. And in 61 was my Arangetram in Bangalore Raj Bhavan. My grandfather was governor. From then on, and I was 17, not a bachchi. And from then on, my career took off along with my academics. Never stopped. Stopped only for 1 year. In 1974 in Germany, on the Autobahn, my car met with an accident. You might have read it. Otherwise, आप देख लीजिएगा. मेरी Facebook में है, Google में है. And my रीढ़ की हड्डी, the 12th vertebra, was powdered. The cord, जो सूत्र है बिल्कुल एक बाल से भी पतला, it was hanging, and the ribs were broken, and so many other things were broken. The German doctors said categorically she will never dance again. She may walk normally after 2 years. For that few moments, few hours maybe, in the German clinic, I thought, should I not die if I can't dance? Because I was quite convinced I was born to dance. कोई पूर्व जन्म का बाकी है. Then things happened, and within 1 year, I came back on my dancing feet. Would you believe it that Peter von Siemens, the big company, he hung my photograph in his office. The clinic where I was taken, in the chief doctor's office, behind his chair was my photograph. अब तो शायद वो लोग भी चले गए. कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैंने लिखा है, as I said, is born out of my own experience. कि यदि मेरे में वो नहीं होता कि after the initial hopelessness, what picked me up? I could not speak because ये सारा टूटा हुआ था. I was in a rucksack like that. I couldn't speak. लेकिन मन में गुनगुनाना शुरू हो गया. मन में श्लोक हैं, भजन हैं, पद हैं. What was I doing? मन में I'm dancing, मन में I'm singing. And that brought me out of that black hole. तो काव्यमयता जिंदगी में कितनी ज़्यादा कारगर होती है उसका तो कोई मेजर नहीं है.
And therefore, I always tell people, my students, my parents, my friends, कि और कुछ नहीं, 24 घंटे व्हाट्सएप लेके बैठ जाना, लैपटॉप पे ये करना, वो करना, गूगल करना, रील्स देखना, सब ओके ओके, दीज आर ऑल टॉयज. आप अंदर अपने जो टैंक खाली होती जा रही है, ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू फिल इट. You have to fill your mind, you have to fill your heart, you have to fill your ideas, the creativity. You have to be somewhere in that landscape. कि दिन में आप 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ ऐसा सुंदर सोचो, पढ़ो, देखो कि जो आपको आगे चलाए, कल तक आपको जिंदा रखे. एंड इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, कविता का द्वार, हृदय का द्वार, उसमें कविता आहट करेगी. और एक बहुत सुंदर सुभाषित है संस्कृत का, कविता वनिता चैव स्वयं आगता वरा. वनिता यानी यंग वुमन. कविता एंड वनिता इज बेस्ट when it comes on its own. बलात् आकृष्यमाणा सरसा विरसा भवेत. और जबरदस्ती आप हाथ पकड़ के यंग वुमन को ले आते हो, शी से आउट. और यदि आप छल से, बल से किसी आइडिया को ले आते हो, इट डजंट वर्क. पीपल डोंट एक्सेप्ट इट. खुद यानी आप उस क्रिएटिव एरिया में, लैंडस्केप में बैठिए, टपकते रहेंगे. लेकिन किसी का देख के, किसी का पढ़ के आपने ले लिया, उसका यहाँ वहाँ करके आपने डाल दिया, doesn't work. I think it's a very beautiful one, right? Yes? कविता वनिता. Yeah. उसके बाद मैंने सोचा कि जो लिटरेचर है उसमें कविताएं कहाँ से, यानी काव्यमयता कब से शुरू हुई. मैं भारतवर्ष की बात कर रही हूँ. I'm not talking of Shakespeare, they are much later anyway. Goethe, Shakespeare, Schiller. ऋग्वेद में अग्नि सूक्त का 10वां मंडल जो है, उसमें अग्नि सूक्त में वाच नाम की जो ऋषि है, शी herself is a ऋषि कन्या एंड she herself is a ब्रह्मर्षि. ब्रह्मर्षि का मतलब क्या हुआ कि जो जानती हैं what is this cosmos, universe, creation about, ब्रह्मज्ञानी. तो क्या कहती हैं वो, यानी the force of her own conviction, her personality, her creativity, and her poetic क्या कहेंगे, बल उसका जो एक है, पावर है. She says, अहम राष्ट्री, पहले शुरू अहम राष्ट्री. I am the चमकती one, I am the दमकती one, I am the incandescent, effulgent being. Aham Rashri. Sangamani Vasunam. I am the giver of all prosperities. Come to think of it, it's the woman. It's the woman in the family who creates prosperity. कोविड के टाइम में देखा गया कि पोटलियाँ छुपा छुपा के रखी थी गाँव में, कस्बों में. आप लोगों का तो वो नहीं होगा, आपके बैंक में होंगी, लेकिन जो छुपा के रखी थी वो पोटलियाँ बाहर निकाल निकाल के, कितनी सारी ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं. सो अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकितुषी, ऑल नोइंग, प्रथमा यज्ञानाम ताम्मा देवा व्यदधु पुरुत्रा. इन ऑल द यज्ञ, ऑल द रिचुअल्स, एवरीथिंग, आई एम द फर्स्ट वन टू बी वर्शिप्ड. भूरिस्थात्रा भूर्यावेशयन्तिम. आई एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स एट एवरी लेवल ऑफ क्रिएशन. ये उसका पावर है. एंड शी वॉज वन ऑफ अस, लाइक यू एंड मी. सो उसके बाद तो बहुत सारा आता गया, द लिटरेचर, बट आई स्पेशली वांटेड टू मेंशन कि हमारा जो उसके बाद उपनिषद है. देखिए, पोएट्री इज़ नॉट जस्ट दैट रिदमिक तो हो, एलिटरेशंस हो, आइडियाज़ हों. सबसे पहले मुझे लगता है कि पोएट्री कर्ण मधु होनी चाहिए. इट शुड अट्रैक्ट यू बाय द वेरी साउंड ऑफ इट. कर्ण कटु हो
So I mean, you know, the arrangement of words can be very clever, very intellectual, but if it doesn't attract you, it doesn't get in. The simple Jayadev ka Gita Govind, which is my most favorite. 12th century poet Jayadev from Orissa, wife Padmavati dancing in the Jagannath temple. Jayadev created one love poem, Gita Govinda. शायद आपने किसी ने सुना हो, ना सुना हो तो देख लीजिएगा. The song of Krishna, the song of Govind. Actually, it's the song of Radha. लेकिन क्यों गोविंद? Because at the end of that poem, Krishna is at the feet of Radha. He is at the feet of Radha, begging for love. तो इसीलिए गीत गोविंद. उसका आप संस्कृत समझो ना समझो, डजंट मैटर, समझो तो अच्छा ही है. लेकिन उसकी पहली अष्टपदी, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे. ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय स ल ल ल ल ल मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे र. And what is the idea? It is the description of spring, जो हम अभी enjoy कर रहे हैं. There are flowers everywhere. New leaves are प्रस्फुटित हो रहे हैं बेल पे, on creepers, on trees. Everything is beautiful. And the kokil, that is the koyal. Acha, koyal, by the way, is not sheep. It's the he koyal that sings. The she koyal has a very karkash voice. We should know that. For a change, among birds is a male who's like the peacock. Among humans, it's opposite. So, और वो कोयल का गान सुनाई दे रहा है. तो इसका यही है कि जहाँ हमें समझ में ना भी आए, लेकिन पहले जो उसका ध्वनि है वो हमें आकर्षित करे, then you want to know more about it. तो ये एक चीज़ और हो गई. उसके बाद मैंने सोचा, मुझे टाइम बता दीजिएगा, आधा घंटा था या 25 या 20 मिनट हो गया? टाइम हो गया? ओके, चलो, आई विल फिनिश. सिंपल वन, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती. मैं बार बार संस्कृत पे इसलिए जा रही हूँ कि मेरे मन में ये हमेशा रहा है कि संस्कृत की जो ध्वनि है, इट्स लाइक अ मंत्रोच्चार, इट्स लाइक अ मंत्र. उसकी जो शुद्धता है, इट क्लीन्स योर पैलेट. जो गड़बड़ गड़बड़ बोलने की आदतें हैं लोगों की, काफ़ी लोगों की हैं, दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग. क्यों? कि इफ नासा कैन हैव सुपर कंप्यूटर संस्कृत, तो हमें क्या तकलीफ है? वो हमारी आलस है. अंग्रेजी शुद्ध बोलने के लिए बहुत मेहनत होगी, हिंदी शुद्ध बोलने की मेहनत नहीं होगी. मातृभाषा तो बोलना ही छोड़ दिया लगभग अब. और हिंदी खाओ पियो, KHAOPIYO. वाओ, यो. नो, ये देखिए, मुझे my great grandchildren, like students, they say, Guruji. I said, what Guruji? They are surprised that Guruji knows yo. तो कौन सी बड़ी बात है? क्या बहादुरी है? Yo. Then what? आगे चलो. Hi, dude, you are very cool. Okay, then. Dude is not cool. Sorry, dude is like a डंडा. तो जो एक प्रोजेक्टनेस आ गई है ना द कविता में, और गद्य और पद्य में क्या फ़र्क है? गद्य और पद्य, पद्य इज़ काव्यमयता, पोएटिक्स, द क्वालिटी ऑफ पोएट्री. उसमें जो फ़र्क है वो हम जिंदगी में समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम काव्यमयता लाएं अपनी ज़िंदगी में, अपने विचारों में, अपनी बोलचाल में, अपने व्यवहार में. उससे एक सुंदर मैसेज जाता है, वाइब्रेशन बनता है. और अंत में मैं महादेवी वर्मा की एक हिंदी कविता आपके सामने पढ़ना इसलिए चाहूँगी
कि it is very timely. Okay, मैंने आपके लिए बाहर करी है 2 मिनट मोर. Okay, right. नहीं, पार्लियामेंटेरियंस को टाइम का ध्यान रखना पड़ता है. 3 मिनट में 0 आवर में बोलना है तो 2.5 मिनट में घंटी बजती है. ओके, ये जो हमारा है. ओके, सॉरी. महादेवी वर्मा, आपने नाम सुना ना हो तो सुन लीजिएगा. शी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएटेसेस ऑफ इंडिया. और अभी 50-60 वर्ष पहले की बात है. शी वाज देयर. आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ, पर तनिक ठहरो. ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ देना. मधुमालती लिपटी हुई है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहीं उंडेल आना. तुलसी के क्यारे में मन की चटकन चढ़ा आना. अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना. आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम, सॉरी. टांग दो उधर. जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना. ऑल नेगेटिविटीज उतार दो. बाहर किल्लोलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग आना. वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना. लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मनुहारों का पंखा झुला दो. देखो शाम बिछाई है मैंने, दैट लवली ट्वाइलाइट बिछाई है मैंने. सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाली छिड़की है नभ पर. नभ यानी आकाश. प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है. चाय, रेड लेबल, ब्लैक लेबल, व्हाटएवर. अब क्या कह रही है महादेवी? घूंट घूंट पीना, सिप इट, डोंट गल्प इट. घूंट घूंट पीना. सुनो, इतना मुश्किल नहीं है जीना. थैंक यू मैम. बात की सार में आना और उसी को समेटकर अपने में समाना, इस शक्ति का एहसास आज हमने किया है और उसको भी हमने घूट घूट कर पिया है. Ma'am, it sounded the kind of profound dhwani which we started. We carried on for another 1 hour. Such a profound and mesmerizing session. We request you to kindly be on stage for some time. To express our deep respect and gratitude, may I request Ms. Usha Ram, former chairperson NPSC, to present Dr. Usha Ram, former chairperson NPSC, to kindly present a stool to ma'am. Thank you so much for this honor that I can. May I request Mr. S.L. Jain, former chairperson NPSC, to kindly present the planter to ma'am. I met Madam in 1968 in Delhi School of Economics, Vivekanand Hall, when she performed. And I was
It is a personal honor for me to be with her and have a photograph with her. Aditi, Sudha, please come. Thank you so much. Thank you. May I request? May I request Mr. L.V. Sehgal, former chairperson NPSC, to kindly present a memento to ma'am. Thank you, ma'am.